In today's video, we are going to learn about chromosomes, and the subtopics that we are going to cover is first the introduction, then explanation and functions of the chromosomes, and then there is a quiz for you guys in the end. So, chromosomes. Chromosomes are basically a structure that is deeply stained and that is present inside the DNA that contain all the hereditary material that passed from one generation towards the other generation. So our cell basically packed DNA threads into many compact structures. ठीक है, जब डीएनए जो थ्रेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा compact स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन compact स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है इट्स डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक टाइप बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल. जब सेल डिवीजन होती है जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक डार्कली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट डार्क thread like structure is known as chromosomes. If you can see in the diagram that is being shown on the screen as well, this thread like structure here is called as chromosomes, right? It contain all the hereditary information. So this is what the chromosome look like. अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो क्रोमोसोम्स हैं इट अपियर टू बी द आर्म एंड द सेंट्रोमियर. हेयर, ये जो ऊपर हैं ये आर्म्स हैं, दीज, एंड द सेंटर वन इज द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर जो है इट इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल fibers are attached during cell division. ठीक है, जो सेंट्रोमेयर होता है वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन में. जो ईच क्रोमोसोम है इट कंसिस्ट ऑफ two identical chromatids at the beginning of the cell division. Chromatid is the exact replica of the chromosome, which are held together at the centromere. So this is showing you the structure of the chromosome like the two arms, and then the shorter arm is present in the above and the longer arm is here below, and then the center is the centromere. Then let's see that how it is composed of, like what is the composition of chromosome. First thing is that the chromosome are composed of DNA and protein. All the information जो कि ज़रूरी होती है in order to control the activities of the cell, it is located on the chromosome but in the form of genes. It is located on chromosomes in the form of genes. ठीक है, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है जिसने सारी सेल की एक्टिविटीज़ को, उसकी मूवमेंट को, सब चीज़ों को कंट्रोल करना है वो जीन्स की फॉर्म में लोकेट होती है क्रोमोसोम के ऊपर. एंड जीन इज़ दैट हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन towards the next generation. If you can see in the diagram that is being shown on the screen here, this is the chromosome, राइट. ये उसकी एक स्मॉलर आर्म है, ये उसकी लॉन्गर आर्म है, ये सेंटर में सेंट्रोमेयर है. ठीक है, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर आपका हेरिडिटरी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स एंड दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स.
then there are certain functions that are being performed by chromosomes. First is that they regulate the protein of the cell because they are formed of the DNA and protein. That's why they regulate the proteins of the cell. Then they determine the gender of an individual. You know that in human, in a girl, the chromosome is XX. Y in boy, it is XY, right? So these chromosomes, they are determining the gender of an individual, right? It also influence or determine the traits of the entire organism, like जो आपका height है, आपका eye color होगा, ये जो भी चीज़ें हैं ये भी आपके chromosomes determine कर रहे होते हैं, ये genes से आ रहा होता है, chromosome genes को contain करते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो ये कुछ genetic instructions होती हैं in order to control these processes. They also contain that, right? They contain the instruction to form the new cells. The codes in chromosomes determine what proteins the cell will produce, right? So these are some of the functions that are being performed by chromosomes. Okay, so this picture is showing you a different number of chromosome that is present in the animals and in the plants. अगर आप देखें तो कैट में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, माउस में 40, ह्यूमन में 46, गोल्ड फिश में 100 होते हैं, एक डॉग में 78, काउ कंटेन 60 chromosome, elephant has 56, snail has 54, fruit fly contain 8 chromosome, Indian mint jack contains 6 chromosome, rye contain 14 chromosome, pasta contain 28 chromosome, then in bread there is 42 chromosome, right? In hedgehog there is 90 chromosome, right? So these are the different chromosome that are present in the plants and animals. However, in a frog there is the frog cell contain about 26 chromosomes. एक जो चिंपैंजी होता है, it contains about 48 chromosomes. इसी तरह जो हमारे पास अनियन होता है उसमें अबाउट 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 48 पोटैटो में होते हैं और 14 हमारे पास गार्डन पी में होते हैं. So you have to remember all these chromosome number. These are very important. They do come in exams, right? So now let's move to the best part, the quiz time. So the first MCQ for today is that chromosome is composed of DNA and protein. Protein is the correct answer here. Frog cell has dash chromosome 26, 46 or 12, 22. It has 26 chromosome. 26 is the correct answer. So this concludes our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.